Hello, friends. Welcome you all to my YouTube channel on English. So, today we'll start with first chapter of first PUC English for Commerce, Arts and Science students of Karnataka Board. That is, The Gentleman of the Jungle. So, this beautiful story is written by African writer Jomo Kenyatta. So, first, let's see who is this writer and his short introduction. So, Jomo Kenyatta, he was born in 1893, and in some books it is referred as 1897 also. But for this consideration, we will take it as 1893, and he died in the year 1978. And he was a Kenyan anti colonial activist, revolutionary, and political theorist, cultural theorist, and politician. He was an African political leader and the first president of Kenya. He belongs to tribe. He was one of the earliest and best known African nationalist leaders. As a secretary of his tribal association, he campaigned for land reform and African political rights. So, this present story will showcase the predicaments and the difficulties which got faced by African people very beautifully in The Gentleman of the Jungle. So, let's start the lesson. As you can see, as soon as we'll open this lesson, we'll see a picture where one hut is there and few wild animals are there. So, this story is narrated in the form of fable. So, fable means we already know. It's a beautiful moral stories. Okay, like Panchatantra stories. So, here a short note was given regarding to this lesson, The Gentleman of the Jungle. So, here we will meet some characters that I will elaborate, that I will explain later. So, let's see what is a short note on this present story, The Gentleman of the Jungle. In the late 19th century, the chief European powers divided Africa among themselves. They could do this because European arms were superior and because the African chiefs did not understand the meaning of the treaties. Treaties means agreement. They were asked to sign. As a result, Africans lost the lands they had traditionally lived on and cultivated. Their attitude towards European expansion is made clear in the following fable, which reflects the attitude of a Kikuyu people of Kenya towards European laws and commissions. So, here one thing is clear. So, here in this story, the animals which are there, which are given in this picture, they portray European power, they portray European customs. And one more character here we will meet, that is innocent man. And this innocent man will portray the character, he will showcase, he will be considered as the person who represent African people. So here this is a story about African people and their problems and difficulties which got faced during the era of European people when they started ruling them, as once upon a time British people ruled over India. So let's start the lesson. So, as every fable will start with a note, once upon a time, this story also starts with the same note, as this is one fable. So, first I'll read and then we'll go with the explanation. Once upon a time, an elephant made a friendship with a man. One day, a heavy thunderstorm broke out. The elephant went to his friend, who had a little hut at the edge of the forest, and said to him, "My dear good man, will you please let me put my trunk inside your hut to keep it out of this torrential rain?"
एक बार की कहानी है जब एक हाथी ने एक इंसान के साथ दोस्ती की। तो एक दिन अ हेवी थंडरस्टॉर्म ब्रोक आउट, एक तूफानी बारिश हो रही थी। द एलिफेंट वेंट टू हीज फ्रेंड, सो हाथी अपने दोस्त के पास गया, हु हैड अ लिटिल हट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। जो दोस्त था उसकी छोटी सी झोपड़ी थी जो जंगल के एज पे थी, नोक पे थी, कॉर्नर पे थी। एंड सेड टू हिम, और उसने उसको कहा, माई डियर गुड मैन, माई डियर फ्रेंड, will you please let me put my trunk inside your hut to keep it out of this torrential rain? तुम मुझे अपने इस सूंड को इस तूफानी बारिश से बचाने के लिए अपनी झोपड़ी में रखने के लिए परमिशन दोगे क्या, प्लीज? करके बहुत ही पोलाइटली उस हाथी ने अपने दोस्त इंसान को पूछा। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, हाथी, ओके, और दूसरे जानवर जो इस कहानी में आते हैं वो सब यूरोपियन पीपल को पोर्ट्रे करते हैं, जबकि जो इंसान है वो अफ्रीकन लोगों को पोर्ट्रे करता है। सो नेक्स्ट क्या हुआ देखो। द मैन सीइंग व्हाट सिचुएशन हिज फ्रेंड वाज इन replied, my dear good elephant, my hut is very small, but there is a room for your trunk and myself. Please put your trunk in gently. इस बेचारे इंसान ने अपने दोस्त को उस बुरे हालात में, सिचुएशन में देख के क्या कहा, रिप्लाई किया, क्या कहा, माई डियर गुड एलिफेंट, मेरे अच्छे दोस्त, माई हट इज़ वेरी स्मॉल, मेरी झोपड़ी क्या है, बहुत छोटी है, बट देर इज़ अ रूम फॉर योर ट्रंक एंड माई सेल्फ, बट इतनी तो जगह है जहाँ मैं और तुम्हारी सूंड रह सकते हैं। प्लीज पुट योर ट्रंक इन जेंटली, तुम धीरे से आराम से अपनी सूंड को मेरी झोपड़ी में डाल दो, कहा उसने। The elephant thanked his friend, saying, you have done me a good deed, and one day I shall return your kindness. तो हाथी जी ने बहुत प्यार से, सोबर वे से, पोलाइटली अपने दोस्त को थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा। और क्या कहता है साथ साथ में, यू हैव डन मी अ गुड डीड, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया है, मेरे पे बहुत उपकार किया है। वन डे आई शैल रिटर्न योर काइंडनेस, एक दिन मैं तुम्हारी इस मदद का क्या करूँगा, वापस तुम्हें काइंडनेस ज़रूर करूँगा, तुम्हें भी मैं एक बार जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, करके हाथी ने इंसान को कहा। बट वॉट फॉलोड, पर क्या होता है आगे जाके देखो। एज सून एज द एलिफेंट पुट हीज ट्रंक इन साइड द हट, स्लोली ही पुश्ड हीज हेड इन साइड एंड फाइनली फ्लंग द मैन आउट इन द रेन एंड देन lay down comfortably inside his friend's hut, saying, my dear good friend, your skin is harder than mine, and as there is not enough room for both of us, you can afford to remain in the rain while I'm protecting my delicate skin from the hailstorm. So here is the twist. सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, जैसे ही हाथी ने धीरे से अपनी सूंड उस झोपड़ी में डाली, उसके साथ उसने अपना सर भी उसमें डाला। देखो झोपड़ी इतनी छोटी और हाथी का सर इतना बड़ा, और जैसे कि इंसान ने कहा था कि वो झोपड़ी बहुत छोटी है, तो इस हाथी ने क्या किया, उस इंसान को फ्लंग, ओके, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ फ्लिंग। उसने उस इंसान को ही उसके झोपड़ी से क्या कर दिया, बाहर बारिश में फेंक दिया, और खुद ले डाउन कंफर्टेबली, खुद आराम से उस झोपड़ी में बैठ गया। इंसान को तो ताजुब हुआ, शौक हुआ, और साथ ही में क्या कहता है हाथी, माय डियर गुड फ्रेंड, मेरे अच्छे साथी, ओके, मेरे दोस्त, योर स्किन इज हार्डर देन माइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी स्किन मेरे से भी हार्ड है, बिकॉज अफ्रीकन पीपल स्किन इज dark and hard, and whether this, okay, European people got white skin, delicate skin they consider it. So and
what else he said, okay, and as there is not enough room for both of us, जैसे कि तुम देख सकते हो कि हम दोनों के लिए इस झोपड़ी में जगह नहीं है, तो यू कैन अफोर्ड टू रिमेन इन द रेन, तुम बारिश में रह सकते हो, बट आई एम प्रोटेक्टिंग माई डेलिकेट स्किन फ्रॉम द हेल स्टॉर्म, सो इस बारिश में मैं अपनी त्वचा को, अपनी डेलिकेट नाजुक त्वचा को क्या करना चाहता हूँ, बचाना चाहता हूँ, तुम्हारी स्किन तो हार्ड है तो तुम बारिश में रह सकते हो करके हाथी ने इंसान को कहा। तो देखो, खुद के घर से किसी को अगर बेघर किया जाए तो कितना बुरा लगता होगा, तो सोचो इंसान की हालत क्या हुई होगी। बेचारा, ये तो मदद करने चला था अपनी दोस्त को, और ये दोस्त क्या करता है, उसको उसके ही घर से बाहर बारिश में फेंका डालता है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है इस कहानी में। The man, seeing what his friend had done to him, started to grumble. The animal in the nearby forest heard the noise and came to see what was the matter. All stood around, listening to the heated argument between the man and his friend, the elephant. In this turmoil, the lion came along, roaring, and said in a loud voice, "Don't you all know what I am? Okay, don't you all know that I am the king of the jungle? How dare anyone disturb the peace of my kingdom?" So the man, okay, who was very angry on that elephant, he started grumbling, he started shouting, okay, grumble means shouting out of anger. So the animal in the nearby, when the other animals which are living in that jungle, when they heard the noise of this man and the elephant, they all gathered there and all stood around and they were listening to the argument between this man and elephant. At who and after listening to this, someone, okay, with a very authoritative tone came there. That is none other than lion, who is king of the jungle. So lion here depicts the queen. Okay, we all know who is the queen of, okay, England. So queen here again, the superior power. Okay, so what he said with authoritative tone. What he said with a loud voice, "I am the king of the jungle, and who tried to disturb the peace and tranquility, the peace, ओके एंड ट्रैंक्विलिटी, ये जो शांति और सौहार्दता जो है मेरे इस ओके जंगल में, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश किसने की, हिमाकत कैसे ने की करके किंग बहुत ज़ोर की आवाज़ में, एक पावरफुल आवाज़ में आके उधर कहता है। तो आगे कहानी में क्या होता है, ओके, उस इंसान को पनिशमेंट मिलती है। क्यों इस के हाथी ने ऐसे इस इंसान के साथ किया। अभी इधर टर्निंग पॉइंट, एक किंग आ गया है, लॉयन आ गया है, ये क्या करेगा वो सब हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन इंग्लिश।